Hello and welcome back to the channel. This is Ramesh sir and you're watching Ramesh sir's lecture series. Wait, I have a good news for all those students who are studying in class 8 because I'm going to upload videos of class 8 and the series is Tulip series of class 8. We are going to discuss the very first poem of the book, that is A Nation's Strength, and it is written by William Ralph Emerson. Before delving into the explanation of the poem, let us briefly talk about William Ralph Emerson. Ralph Emerson was born May 25, 1803. He died on 27 April 1882. And he was an American. He was born in Boston. Now, I have a question for all of you. Now you know that he was born in 1803 and he died on 1882. Can you tell me which century he belonged? Is it 18th century poet or essayist or 19th century poet or essayist? Was he 18th century essayist? Was he 19th century essayist? So this will be a home task for all of you. Now, William Ralph Emerson, he was an essayist, he was a lecturer, philosopher, and a poet. Some of his famous essays are: one is Self-Reliance, second is The Oversoul, the third is Circles, the fourth is The Poet, and the fifth is Experience. These are some of his essays. Now, A Nation's Strength is the very first poem in your book, Tulip series book. When we first read out the title of the poem, A Nation's Strength, a nation means कौम, कोई भी कौम या मुल्क, and strength means the power. ओके हम किस नेशन को पावरफुल बोल सकते हैं? ओके विच नेशन कैन बी नोन और कैन बी कॉल्ड एज पावरफुल, और विच नेशन इज पावरफुल, राइट? सो दिस इज नॉट अ क्वेश्चन हियर, but it is a title of the poem. But when you start understanding the poem, when you start reading the poem, you will learn that he is at the same time asking a question. वो हमें सवाल भी पूछता है पोइट, और लेकिन खुद ही जवाब भी देता है. Okay? And I will tell you what is that term called, where you ask the question. That is the style of saying the statement in a question tone. आप एक बात को इस तरह से बोलते हैं कि वो क्वेश्चन बन जाए, and the answer you know for that question already. You know the answer, but you still are asking the question. This is the style of convincing the people. And this particularly, this term will be defined later on in the poem. Now, let us read out the poem. As always, before starting to describe the poem, we read out the poem first. So, let's enjoy the reading.
What makes a nation's pillars high and its foundations strong? What makes it mighty to defy the foes that round it throng? It is not gold, its kingdoms grand go down in battle shock. Its shafts are laid on sinking sand, not on abiding rock. Is it the sword? Ask the red dust of empires passed away. The blood has turned their stones to rust, their glory to decay. And is it pride? Ah, that bright crown has seemed to nations sweet, but God has struck its luster down in ashes at his feet. Not gold but men can make a people great and strong, men who for truth and honor's sake stand fast and suffer long. Brave men who work while others sleep, who dare while others fly, they build a nation's pillars deep and lift them to the sky. This is a poem of how many stanzas? The poem consists of 6 stanzas. Okay, there are 6 stanzas in the poem. Now, let's see the first stanza. What makes a nation's pillars high? कौन सी चीज एक कौम के पिलर को हाई रखती है? कौन सी चीज इसको ऊपर ले जाती है? You will remember this word, pillar. कौन सी चीज है दुनिया में जो एक कौम को, एक मुल्क को, उसके पिलर्स को हाई करती हैं and its foundation strong? What is this which makes the foundation of any country strong? कौन सी चीज इसकी बुनियाद को, इसके फाउंडेशन को स्ट्रांग बनाती है? What makes it mighty to defy? What makes it powerful to defend itself? कौन सी चीज इसको पावरफुल बनाती है डिफेंड करने में? The foes that round it throng. When all the enemies come and they surround any country, जब कोई भी मुल्क या कोई भी लोग इस कंट्री को आके इसको सराउंड करती है, इसको घेरे में ले जाती है, तो कौन सी चीज़ उस कंट्री को उन एनिमीज से डिफेंड करवाती है? ये क्या चीज़ है? Now see, as I told you, in the first stanza you are looking at wait a minute. You are looking at these question marks, maybe. Okay? This question mark, right? Now these are questions, we know it. Poet is asking questions. But what do you think about poet? He doesn't know the answers? He knows the answers. But then what is the fun of asking questions? Right? This is a literary device, remember. ये एक literary device है जहाँ ये एक स्टाइल है rhetoric का, जहाँ पे आप क्या करते हो, you know how to speak words, you know how to use words or which word to use. It's the style of language. एक लैंग्वेज का स्टाइल होता है जहाँ पे आप अपने वर्ड्स को जानते हो, कैसे आप यूज करते हो, राइट? एंड सिमिलरली दिस स्टाइल ऑफ आस्किंग an interrogative, asking a question to you, it is actually a style of convincing the readers. Remember, ये इसलिए हम ऐसे questions पूछते हैं when the author, when the poet knows the answers and still he asks his questions. It is the way of, it is the style of language. It is the style of saying. Okay, how do you make people interesting? How do you make them convince what you are going to say? आप कैसे कन्विंस करोगे रीडर्स को? दिस इज द वे, वन वे ऑफ कन्विंसिंग द
people. Okay, this is the language style. Now see, poet is asking questions कि कौन सी चीज़ एक कौम के पिलर को हाई करती हैं, कौन सी चीज़ के फाउंडेशंस को मजबूत बनाती हैं, कौन सी चीज़ इसको डिफेंड करवाती हैं when the enemies surround the country. Now let's talk about the second stanza. It is not gold, it's kingdom's grand. Now see, in the first stanza the poet is asking us questions, right? The poet asks questions, and in second stanza you see the answers of this. Okay, in the negative way. See, it's not gold, it's kingdom's grand, go down in battle shock. Poet कहता है कि गोल्ड नहीं है जो एक किंगडम को ऐसे पावरफुल बनाएगा या स्ट्रांग बनाएगा. इट्स नॉट गोल्ड. वाई? बिकॉज किंगडम्स ग्रैंड गो डाउन इन बैटल शॉक. किंगडम्स जो होती हैं वो जंग करने जाती हैं, वो बैटल करने जाती हैं किसी बैटल फील्ड में. दे गो डाउन, वो हार जाती हैं, वो ख़त्म हो जाती हैं, राइट? उनकी उनका जो प्राइड होता है ना, वो सारा ख़त्म हो जाता है. इट shafts आर laid ऑन सिंकिंग सैंड. द पोइट सेज दैट कि लोग एक दूसरे को मारते हैं फॉर द सेक ऑफ किंगडम, in order to make their kingdom safe. They kill people, right? Just to make their kingdom safe. अब वो बैटल में जाते हैं, एक दूसरे को मारते हैं. That means its shafts are laid on sinking sand. The columns of building's foundation, right? The shafts, I mean the pillars of that country is laid on sinking sand. ये जो एक कौम की बुनियाद है ना, मतलब आप किसी किंगडम के लिए जंग करने जाते हो तो इसका मतलब है कि उसकी जो बुनियाद है वो एक सिंकिंग सैंड पे है. दैट इज़ नॉट ऑन अबाइडिंग रॉक. दैट मीन्स जब आप किसी कंट्री के लिए लड़ते हैं, किसी किंगडम के लिए लड़ते हैं, दैट मीन्स योर कंट्री माइट बी डिफीटेड, राइट? तो वो डिफीट भी हो सकती हैं, दूसरी कंट्री को डिफीट मिल सकती हैं, इस कंट्री को डिफीट मिल सकती हैं, राइट? सो इट्स अ टेम्पररी थिंग. यू आर नॉट हियर फॉर सो लॉन्ग. आपकी किंगडम खत्म हो जाएगी. इट्स नॉट एन अबाइडिंग रॉक. इट्स नॉट ऑन समथिंग विच लास्ट्स फॉर एवर. ओके, तो ये किंगडम, ये कॉन्सेप्ट ऑफ किंगडम जो है ये ख़त्म होने वाली है. ये इट्स नॉट गोइंग टू बी देयर फॉर सो लॉन्ग टाइम. Okay, it will be finished with the passage of time. Now let's talk about the third stanza. Now the poet is again asking the questions. वो फिर से हमें इस तीसरे stanza में question पूछेगा. Is it the sword? Ask the red dust of empires passed away. Now see, अब क्या ये तलवार है? क्या ये is it a sword जो एक country को powerful बनाती है? इससे क्या हुआ? Sword is the symbol of pride, right? The battle, the killings of people. तो इतना खून बहा है लोगों का इस वर्ड से, बिकॉज स्वर्ड इज द सिंबल ऑफ बैटल, सिंबल ऑफ किलिंग ईच अदर, राइट? ऑफ जस्ट वैनिशिंग द होल मैनकाइंड. तो इतने लोगों को मारा है कि उनका जो खून है ना, वो ज़मीन पे पड़ के एम्पायर्स पास्ड अवे, राइट? और उस खून को अब रेड डस्ट. If you ask this question that is it the sword, क्या ये sword है जो एक country को powerful बनाएगा? Poet says ask the red dust of empires passed away. ये जो red dust है ना, it is now red in color. Ask this red dust. ये जो color red हो गई है ना, ये it's because of the blood. Okay, people have been killing each other on that land or sand, right? तो इतनी empires passed away हो गई, ख़त्म हो गई, ठीक है? द ब्लड हैज़ टर्न देयर स्टोन्स टू रस्ट. इतना खून बहा ज़मीन पे कि उसको जंग लग गया. ओके, उसको रस्ट पड़ गया, ऊपर स्टोन्स को रस्ट पड़ गया. देयर ग्लोरी टू डिके. ओके, देयर ग्लोरी, देयर प्राइड, देयर माइट, राइट? देयर एवरीथिंग दे लॉस्ट. ओके, एवरीथिंग गॉट डिस्ट्रॉयड. They are having nothing in their hands. So everything is for some time. Okay, you are having pride right now, but after some time you may be decayed. Okay, your existence will be nowhere. आपका वजूद ही कहीं नहीं होगा, आप खत्म हो जाओगे. So a sword cannot be the kind of
the witness or kind of the assurance for any country that it will save the country. Never ever. Sword भी नहीं है, right? It is not might even, power भी नहीं है. तो कौन सी चीज़ इसको बचाती है? Now the poet is again asking a question, and is it a pride? क्या ये घमंड है? क्या ये घमंड है जो एक कौम को बचाती हैं? That bright crown has seemed to nations sweet. You know, this pride is very sweet to nations for some time. Right? This is very sweet for some time. Why? Because सारी जो कंट्रीज हैं, सारे मुल्क जो है, नेशन जो है, वो दे आर टेकिंग प्राइड इन देयर कंट्रीज, राइट? उनको घमंड होता है अपनी कंट्री पे. दे आर गोना किल ईच अदर फॉर द सेक ऑफ देयर कंट्री, राइट? नेशनलिज्म, they will kill everybody on this concept of nationalism. They love their country and they hate others' country. That's not the way. क्या ये पॉसिबल है कि आप सिर्फ एक इंसान को इसलिए नफरत करते हैं बिकॉज ही इज बिलोंगिंग फ्रॉम अदर कंट्री, राइट? नो, यू आर जस्ट हेटिंग अदर पर्सन बिकॉज ही इज हैविंग ब्लैक कलर और वाइट कलर बिकॉज शी इज अ फीमेल. नो. तो ये जो घमंड है ना, हर एक मुल्क अपने आप में घमंड दिखाता है that the country is powerful, they're having the weapons, they're having the nuclear, right? तो वो घमंडी है, उनको घमंड लगता है अपनी कंट्री का. And this pride is very sweet to all the nations, but God has struck its luster down in ashes at its feet. But God doesn't like this pride, okay? खुदा को उनका घमंड बिल्कुल अच्छा नहीं लगता. God hates it, right? उनका घमंड खुदा को अच्छा नहीं लगता. तो उनका जो सारा जो लस्टर, शीन और ब्राइटनेस, right? Their power, their strength, everything is destroyed by God, right? तो उसका क्या होता है? उनकी लस्टर, उनका तकब्बुर, उनका घमंड, वो सारा एशेस बन जाता है, right? They are burnt. वो खत्म हो जाते हैं, वो जल जाते हैं. They become ashes. And where are the ashes right now? They are at feet. पैरों में उनकी जगह होती हैं. तो right now आप घमंड दिखाते हो that I belong to this country, I am from that country, my country is better than your country, his country is better than my country. These are only the statements, right? We are human beings. We should come over this idea, right? We are equal. Nobody is going to be more than humans. We are all humans and we are going to be humans and we will die as humans. Now, the second last stanza of the poem says, not gold, but only men can make. Now see, in the last two stanzas, poet gives us the answer for the question. Not gold, but only men can make a people great and strong. Now, poet believes in the power of men. Power of men, right? He believes in the power of men. He believes that if a country is having the good citizens, the country will prosper. If the countrymen are worst, okay, there is the worst situation is for the whole country. Poet says कि सिर्फ इंसान है, इंसान, human is the only resource which can make any country powerful. ठीक? A people great and strong. एक कौम को, लोगों को मजबूत कौन बनाएगी? Only men. Men who for truth and honor's sake stand fast and suffer long. ये ऐसे लोग होते हैं, they stand for truth, okay? And they stand for honor. और इन दो के लिए, सच्चाई के लिए और ऑनर के लिए, they stand fast, right? They stand fast. वो खड़े रहते हैं and they suffer long. For why are they suffering? Why would they suffer? Because men love their country, right? Man has honor for its own country. Men or man, when I say man, it includes women also. So man and women both who fight for truth, who fight for honor, okay, they are the only resource for any country who can make the country powerful. सिर्फ इंसान ही है जो एक मुल्क को, जो एक कौम को पावरफुल बना सकते हैं. Then
ब्रेव मैन हु वर्क व्हाइल अदर्स स्लीप। ये ऐसे लोग होते हैं, ये इस तरह के ब्रेव इंसान होते हैं कि ये दे वर्क, राइट, दे वर्क व्हाइल अदर्स स्लीप। बाकी सारे खराटे मार रहे होते हैं, लेकिन ये जो ऐसे लोग होते हैं ब्रेव मैन, ये फाइट करते हैं अपनी कंट्री के लिए। दे फाइट फॉर द ट्रूथ एंड द ऑनर ऑफ अ कंट्री, हु डेयर व्हाइल अदर्स फ्लाई। दे स्टैंड फर्म, जबकि बाकी भाग जाते हैं। दे बिल्ड अ नेशंस पिलर्स डीप। दीज आर द पीपल हु मेक द नेशंस पिलर्स डीप। ये इनको मजबूत बनाते हैं। दे टेक डाउन दीज पिलर्स डीप इनटू द अर्थ। They make the foundation strong, they make the shafts strong, they make the pillars strong and lift them to the sky. And this is the job of those brave men who take the truth and honor of any country to the sky. वो इस कंट्री को ऊंचाई पे ले जाते हैं, वो इसकी खातिर अपनी जान को, अपने माल को खर्च कर देंगे, ठीक है। They will stand forever when it comes to truth and honor. Right? So this was the explanation of the poem. I hope you understood this much. Now let's talk about the literary device used in the poem. First literary device is metaphor. Before we talk about the devices, let me tell you what poetic device is. Poetic device is actually a tool. Poetic device एक ऐसी device is tool, you know it. Device एक चीज़ को बोलते हैं, एक किसी आले को बोलते हैं, राइट। तो पोइटिक डिवाइसेस ऐसी चीज़ें होती हैं, ऐसे टूल्स होते हैं जो कि पोइट यूज़ करता है। सिंपल, पोइटिक डिवाइसेस कौन यूज़ करेगा? पोइट, राइट। पोइटिक, वेट अ मिनट, पोइटिक डिवाइसेस कौन यूज़ करेगा? पोइटिक डिवाइसेस। डिवाइस हम कहते हैं चीज, किसी टूल को, राइट। पोइटिक इज समथिंग विच इज रिलेटेड टू पोइट, रिलेटेड टू पोइट्री, राइट। तो ये पोइटिक डिवाइस जो है ये पोइट यूज करेगा। ये क्यों पोइट यूज करता है? ताकि उसको जो एक्सप्लेनेशन होती है, उसका जो डिस्क्रिप्शन होता है ना, वो एग्जैक्ट बने। उसको बात समझाने के लिए कभी कभी कोई आला, कभी कभी कोई टूल यूज करना पड़ता है। उस चीज़ को अच्छे से डिफाइन करने के लिए हम कुछ डिवाइसेस यूज़ करते हैं, जिन्हें हम पोइटिक डिवाइसेस कहते हैं, और वी मे कॉल इट ऑल्सो लिटरेरी डिवाइसेस, ठीक है। तो पहला जो है टूल, दैट इज़ मेटाफोर। मेटाफोर क्या होता है? मेटाफोर एक कंपैरिजन होता है दो डिफरेंट चीज़ों में। इट इज़ अ कंपैरिजन बिटवीन टू डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स, टू डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स, बट वन थिंग बिटवीन द टू इज़ कॉमन। उसके बेसिस पर हम उनको कंपेयर करते हैं। For example, in the poem you see when the word pillar is actually it belongs to a building. तो यहाँ पे एक कौम को बिल्डिंग के साथ कंपेयर किया गया है, as if the nation is any building. तो हम कह सकते हैं कि ये जो वर्ड pillars हैं, it is a symbol of a building and the nation has been represented as a building. This is a metaphor. And in metaphor we do not use like or as. Okay? We don't use like or as. And you may say that it is a direct comparison. इसमें क्या होता है? आप लाइक और एज यूज नहीं करते हैं, लेकिन आप डायरेक्ट इसको कंपेयर करते हैं। तो यहाँ पे पिलर का जो वर्ड यूज हुआ है पोइम में, ये असल में आपको क्या बताता है? बिल्डिंग के बारे में, क्योंकि पिलर किसके होंगे? बिल्डिंग के ना। लेकिन आप ये जो बिल्डिंग समझा रहे हैं, यू आर एक्चुअली डिस्क्राइबिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ नेशन। तो नेशन को कंपेयर किया है एक बिल्डिंग के साथ, राइट। दिस इज द डायरेक्ट कंपैरिजन and this is metaphor. Now coming up onto the second one, that is symbol. Symbol is actually an image, or you may say symbol, a representation. किसी चीज़ को दिखाने के लिए कोई सिंबल यूज़ करना। लाइक इसमें आप देखते हो पोम में कि इसमें स्वर्ड यूज़ किया गया है। एज आई डिस्कस्ड, स्वर्ड जो है ना, इट इज़ द सिंबल, इट इज़ द रिप्रेजेंटेशन ऑफ वॉर्स।
Because in earlier times people used these swords for killings, right, for the whenever they go in battlefield. तो वो इस तलवार को, तो sword is the symbol of wars, right? Now it becomes the direct symbol, right? So जब जो वॉरियर्स हुआ करते थे वो जब जंग करने जाते थे तो वो तलवारें लेके जाते थे, तो समटाइम्स दे मेक इट अ सिंबल ऑफ the wars, right? So sword is the symbol in the poem. Now talking about the rhyme scheme of the poem, that is high, if we go by the first stanza, high, strong, defy, throng. The rhyme scheme of the poem is high, A, strong, B, defy, A, throng, B. That means AB, AB is the poetic is the rhyme scheme of the poem, right? And coming up onto the first stanza and third stanza and fourth stanza, I talked about the question. मैंने आपको बोला कि पोइट क्वेश्चन हमें बोलता है जिसका वो आंसर ऑलरेडी जानता है, तो फिर उसने क्यों हमें क्वेश्चन पूछा? इस डिवाइस को हम कहते हैं, remember this point, this is a very important point, rhetorical question. Okay, rhetorical question is a style of asking anything in order to convince the readers. ठीक है, इसको हम rhetorical question कहते हैं. So rhetorically poet says कि do you know what makes a nation strong? So he brings us the curiosity, right? He wants us to develop this curiosity of what is that actually the thing which makes any country stronger. So I hope this is clear to all of you, and I need two things from your side. First is to like the video, and the second is subscribe to my channel. And if you have any confusions, you can write in the comment box. You can give me the suggestions, and your queries, questions will be appreciated. And once again, your one subscribe or your one like gives me kind of motivation to keep making the videos, inshallah, in future. So with this, I'm ending this first session for class 8. Thank you so much.